Jai Shri Mataji. Let us all bow down before Shri Mataji and take बंधन. हम सभी श्री माताजी के श्री चरणों पर नतमस्तक होके बंधन लेंगे. तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र.
Happy Christmas to you all. May God bless you. The birth of Christ is celebrated all over the world, and it's nice that we are celebrating here at Ganpati Pule his birth. As you know very well, in Sahaja Yoga, we have realized that the principle of Christ was Sri Ganesha. So this is the right place to celebrate the Christmas, and the birth of Christ is the absolutely it coincides today, and I'm very happy that you have chosen Ganpati Pule for that. Now, as you know very well, that Ganesha's principle became the principle of Christ at the Agya Chakra. And that's a very important center that we have within ourselves, which has given us a new dimension to our personality, that we can resurrect ourselves as Christ resurrected himself. So the message of his life is resurrection. So from his birth, he got his resurrection done in the same way. You are born again when you get your resurrection or you become Sahajogis. On the same principle it works. But he had to physically pass through all the penance, as we say that he died for us, for our sins. But now as he has done that for us, the Agya Chakra is absolutely at our command, that we can open it out whenever we like, if we are Sahajogis, and we can enlighten that chakra also. This is the chakra always caught up by people who try to talk about Christ, to say things about Christ, or to profess that they have Christ in their pockets when they have no connection with Christ. For this, Christ has very clearly said that you will be calling me Christ, Christ, and I won't recognize you. There are so many people of this kind, and that's why the celebration of Christ's birth by them is just a festival but has no deeper significance. But for Sahajogis, it's a very great happening, because his birth has brought such a great incarnation on this earth, and by that we could achieve our realization, because he is at the gate. So today is the day of thankfulness for Christ's advent on this earth, and we have to see that as he is our eldest brother, we can say, he is our leader, we have to follow his footsteps. In our resurrection, we have to show that we have imbibed the qualities which are Christ-like, illuminating the whole universe with our enlightened lives. The very big responsibility on Sahajogis to understand that when we are celebrating today the birth of Christ, we stand for something very much beautiful, pure, and glorious. Christ's life is a symbolically can be called as the symbol of purity and holiness. He was purity and holiness. When we talk of purity, we
may think about outside purity, or maybe the purity of our writings or talking, or maybe we are very sophisticated, or we talk very sweetly, or we are very kind. But Christ was pure in the sense that he was nothing but purity. And he went to this extent of purity that he said that thou shalt not have adulterous eyes, that your eyes have to be pure. Even up to the eyes, he said, thou shalt not have adulterous eyes. So the lust and greed has to disappear from our personality if we have to follow Christ, if we have to understand what an incarnation of holiness he was. Holiness is very important today when in this Ghor Kali Yuga you find all kinds of horrible things happening. If you believe in holiness, in your chastity and in your purity, then your morality is within yourself. It's not outside. Whatever people may say about Christ today, but you know, as Sahaj Yogis, that he was purest of pure. In the same way, we should try to keep our purity above everything else. The most important thing for us is to be pure people. Pure from heart, pure in our morality, pure in our thinking, and pure in our rapport that we have with others. Not just a show, not just artificiality, but from within we should feel that oneness, that understanding that we are all Sahaj Yogis, born of a mother, and we all have to love each other. That is the greatest blessings you could give to me, and also the greatest joy for Christ, to see that all of you are absolutely in unison and in complete accord with each other. This is something one has to understand, that he also said to his disciples that the greatest pleasure for me is to see you all together in one unison. But now the collective consciousness is within your consciousness. You can feel the collectivity within yourself. So it should be very easy for you to become one with each other, to understand each other just like a part and parcel of one being. So I wish you all a very happy Christmas, and let us start this new year with the full idea that we have to have that dedication of Christ, that understanding of Christ, how he dedicated his life, which was very short, for the establishment of purity in this world. If the Sahaj Yogis do not have that personality, they cannot establish Sahaj Yoga anywhere. So the first and foremost thing we have to aspire is purity. As you know very well, that Adi Shakti first created Sri Ganesha, who is the symbol of purity. So today we have to take a vow that henceforth we are going to follow a life of complete purity and detachment. That's not so difficult if you understand Sahaj Yoga. If you are Sahaj Yogi, it's very easy to purify yourself. I'm so very happy you all could come here. Lots of inconveniences are there, but as you being the saints now, don't complain anything, and you are enjoying whatever is there, the pure air of this place and the purity of nature that is around us. Let us also meditate and emit, manifest that beautiful thing that is within us, which is the spirit. And I'm sure all this place will be vibrant very soon. As it is, I could feel the vibrations from a very long distance when I came. May God bless you all. Complete cooperation of Malgum people, we could not have had this seminar here. This has a very historical significance because, as you have read, that
Sri Rabindranath Tagore, the great poet from Bengal, has described completely in a full way, in a very precise manner, exactly the way this seminar will be held on the shores of Bharat. And that's how we are here in Malgun, and that means Malgun seems to be a very important place for the poets, because how did it come into his understanding and his vision? What I feel that he was a great seer, and he must have seen this place in his vision, as I also saw in my own vision this place, and I just arrived here. So I think this Malgun must be a great place, and you must be all very great people to be born in this beautiful place where such a great event is taking place. May God bless you all, the people of Malgun. Now, बैठे थे प्रोग्राम में, आए थे, तो भी कुछ न कुछ अपनी विपदा सोचते रहे, अरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और माता जी से मैं कब बताऊं मेरी विपदा क्या हुई, माता जी आप देवी हैं, मेरी ये विपदा है। बजाय इसके कि जो कहे जा रहे हैं उसे समझे, अपनी ही अंदरूनी बात को ही सोच सोच करके आप चली गई उस बहकावे में, और उस बहकावे में आपको कैंसर की बीमारी हो गई, नहीं तो ये बीमारी हो गई, वो बीमारी। वैसे ही मानसिक बातें, हम मन से क्या सोच रहे हैं, मन में हमारे कौन से विचार आ रहे हैं? सब यही ना कि हम पे ये दुख है, वो दुख है, ये पहाड़ है। लेकिन सोचना कैसे, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने पे कितने आशीर्वाद है परमात्मा के। ऐसे दिल्ली शहर में करोड़ों लोग रहते हैं, कितनों को सहयोग मिला है। हम कोई विशेष व्यक्ति हैं, ऐसे वैसे नहीं कि अपने चित्त को बेकार करें, हमें सहयोग मिला है, इसकी धारणा होनी चाहिए अंदर से, और उस अंतर मन में उतरना चाहिए। उसी से ये जो झूठी मर्यादा है सब टूट जाएगी। और अगर आप नहीं तोड़िएगा तो किसी न किसी तरह से ऐसे कुछ आपको अनुभव आएंगे कि आपके टूटते जाएंगे। जिस चीज को आप सोचेंगे ये हमारा अपना है, आप कहेंगे हम दिल्ली वाले, एक दिन ऐसा आएगा कि दिल्ली वाले आपको ठिकाने लगाएंगे। आप कम नोएडा वाले हैं तो ऐसा दिन आएगा कि नोएडा वाले आपके पीछे बंदूक लेके लग जाएंगे। तब आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कहता था मैं नोएडा वाला हूँ। और फिर आप जब दौड़ेंगे दिल्ली वालों की तरफ, दिल्ली वाले कहें तुम तो नोएडा वाले हो, यहाँ का आए तुम, तो घर के ना घाट की ये हालत आपकी हो सकती है। उसकी वजह ये कि आपका चित्त ही ऐसा है जो घर का ना घाट का। जब तक इस गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक आप अपने को अगर सहयोगी नहीं कहे, सहयोगी कहे, तो भी मैं मानती नहीं हूँ इस चीज को, क्योंकि सहयोगी की पहला लक्षण ये है कि वो शांत चित्त होता है और अत्यंत सबल, किसी से डरता नहीं, सबल है, और उसका जीवन अत्यंत शुद्ध होता है, उसका शरीर शुद्ध होता है, उसका मन शुद्ध होता है, और आत्मा के प्रकाश से वो सारी दुनिया में प्रेम फैलाता है। जो आदमी प्रेम नहीं कर सकता वो हमारे विचार से सहयोगी बिल्कुल है ही नहीं, वो तो पहली भी सीढ़ी नहीं चढ़े। जैसे आकाश में आप देखते हैं कि बहुत सी पतंगे चल रही, लेकिन वो किसी के हाथ में होती। अगर कोई भी पतंग कट जाए, हाथ से छूट जाए, तो न जाने वो कहाँ चली जाए। वही हाथ आत्मा है। तो अपने चित्त को अपनी आत्मा की ओर रखते, अपने को शुद्ध करते जाना ही सहयोग में तप स्वरूप है। इसके लिए आपने आज हवन किया, ये भी तप, क्योंकि अग्नि जो है
वो सब चीज को भस्म कर देती। उसी तरह से आपके तप से आपके अंदर जो भी इस तरह के दुर्विचार है या गलत इस तरह की मर्यादाएं हैं वो सब टूट जाएंगी। आनंद पाना ये आपका अधिकार है और आप आनंद को पा सकते हैं और पाया है आपने आनंद को। लेकिन आनंद बांटने के लिए अपने अंदर गहराई होनी चाहिए। अगर आप गंगा जी में जाएं और इतनी छोटी सी एक कटोरी ले जाएं तो आप कटोरी भर पानी लेके आ जाइए, लेकिन आप जब एक घाघर ले जाएं तो आप घाघर भर के ले आ सकते। पर अगर किसी तरह से आप ऐसा कुछ इंतजाम कर ले कि पूरी समय गंगा जी से पानी बहता है अपनी तरफ, तो आपके चारों तरफ गंगा ही बहते रहे। तो किस स्थिति में आप है वो देखना चाहिए। क्या आप कटोरी भरी पानी सहयोग से ले रहे हैं, क्या अपने ही सीमित आनंद में है या सबके आनंद के लिए है, और अगर आप स्वयं ही इसका स्रोत है। तो जो आज्ञा का चक्र है ये तप है, ये तप है। गहराई को छूने के लिए जरूरी है कि तपस्विता चाहिए। फैल हम जाते हैं बहुत, सहयोग बहुत जोर जल्दी फैलता है। अभी आप प्रोग्राम में देखिएगा, मुझे तो यही डर लग रहा है कि उस हॉल में पूरे पड़ेंगे कि नहीं, कि क्या होने वाला है। फैलेगा बहुत जल्दी, लेकिन गहरे कितने उतरे हैं। सो गहराई के लिए तपस्विता की जरूरत है। अब तप का मतलब हम ये नहीं कहते कि आप बैठ के उपास करो, जरूरी नहीं, पर अपना चित्त अगर खाने पर है तो उसे हटाना है। मेरा चित्त कहाँ है इसको देखना ही सहयोग की तपस्या है, क्योंकि चित्त से ही आप आगे अपनी खराब करते हैं। कहाँ है मेरा चित्त, मैं क्या सोच रहा हूँ इस वक्त, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। ये अगर अपना चित्त अगर आप देखें, अंतर मन को हमेशा अपने सामने रखें, तो आपका चित्त जो है वो आज्ञा में प्रकाशित हो जाएगा। यही तपस्या है कि अपने चित्त का निरोध और चित्त का अवलोकन, चित्त का विचार। अब देखिए आपका चित्त कहाँ गया, मैं बात कर रही हूँ, चित्त कहाँ है। चित्त की बात करते चित्त कहाँ गया, देखिए। इतना विचलित चित्त है, मैं बात कर रही हूँ, आपका चित्त कहाँ है। सो चित्त की ओर नजर रखना। चित्त का निरोध माने जबरदस्ती नहीं, लेकिन अब आत्मा के प्रकाश में अपने चित्त को देखने से अपना चित्त जो है वो आलोकित हो जाता है। एकाग्र होकर के अपना चित्त देखना चाहिए, किसी भी चीज को देखना है। जैसे अब ये खंबा है मेरे सामने, इसमें सुंदर से फूल लगे हुए, अब हर कटाक्ष में निरीक्षण हो जाता है। ये सारा मुझे अब याद है, कहाँ पर कौन सा, कहाँ कितना अंतर रह गया, क्या हो गया, पूरा पूरा चित्र सब हो गया। क्योंकि चित्त की जो एकाग्रता है उसी से ये चित्र बनता है, उसी से आपकी स्मृति अच्छी हो जाती है, सब चीज पूरी तरह से आप जान सकते हैं। चित्त से ही सब चीज जानी जाती है। लेकिन चित्त अगर विचलित हो तो आप कोई भी चीज को गहराई से नहीं पकड़ सकते। हर समय घूमते रहेगा तो कोई चीज याद ही नहीं रहेगी। आप देखिए, आप, मैं तो हर जगह देखती हूँ, एयरपोर्ट में बात इनसे कर रहे हैं, देख रहे उधर, उधर देख रहे, उधर देख रहे, उधर देख रहे, याद कुछ भी नहीं रहा कौन है क्या है। तो शुद्ध चित्त जो होता है वो एकाग्र होता है, और एकाग्र चित्र वही चीज लेता है जो लेना है। जो नहीं लेना उधर देखता ही नहीं, उसको दिखाई ही नहीं देता, हट जाएगा चित्त अपने आप, क्योंकि वो इतना शुद्ध है कि अशुद्ध चीज में वो मलिन हो ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। तो ये अब आप ही के हाथ में है
कि आप अपने अंदर इसको देखें कि हमारा चित्त कहाँ जा रहा है। यही तप, सहयोग का तप सिर्फ ये है कि मेरा चित्त कहाँ जा रहा हूँ, मेरा मन कहाँ जा रहा है। अगर ये तप आपने कर लिया तो आज्ञा को आप लांग गए, और संसार में तो कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि हम बैठे ही हुए हैं। Jai Shri Mataji. We will now begin the seminar and cultural program for today. Let's all pray to Shri Mataji to help us with this seminar and cultural program and to bless all the performers to be able to present in front of her. श्री माता जी से विनती करेंगे कि आज हमें इस सेमिनार और कल्चर प्रोग्राम को करने की अनुमति दें। Today the first performance, which is a dance on the song of Amba Bhai Gondhad Lale Ye. The relevance of this song is about a lady who is troubled by negative men or forces around her. She is continuously troubled. She has to fight it alone by strengthening her inner self. Through this, she invokes the divine presence of the Devi within her to fight those forces who try to keep suppressing her. This performance is brought to us by the Nirmal Sakhi group from Ulhasnagar, Mumbai. जो अगला परफॉर्मेंस है वो उल्हासनगर मुंबई से निर्मल सखी ग्रुप का है, जो हमें नृत्य करके दिखाएंगे अंबा भाई गोंधड़ ललैये के गाने पे। जय श्री माता जी। अगधावा इठाई ठाई दैत्य मातला अनसंपुदेत काळ दुष्ट बंधनातला। अगधावा इठाई ठाई दैत्य मातला अनसंपुदेत काळ दुष्ट बंधनातला। आता त्रिशूळ तू हातात आई घे, बळतेच आज संबळाला दे। अन अंबाबाई गोंधळाला गे, अन अंबाबाई गोंधळाला गे। तुळजाबाई गोंधळाला गे, अन काळूबाई गोंधळाला गे। हे सप्त शृंगवा
अंबाबाई गोंधळाला ये, अगं अंबाबाई गोंधळाला ये, तुळजा भवानी गोंधळाला ये, अगं काळूबाई गोंधळाला ये. रात सरली काळी ग, उभी पाठीशी जगदंबा, आई संकटातून तार तुझे उघडून ये दार, आई गोंधळाला येणार तुझा मनला दरबार, तुझ्या दिवटीचा ग चाळ झाला दुर्जनांचा काळ, आता तूच ग सांभाळ, आई गोंधळ मंडला आज गोंधळाला ये, आई गोंधळाला 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 ये. अंगार जो तुझ्या नजरेत पेटला आणि तीच आग संबळाला दे, अगं अंबाबाई गोंधळाला ये, हे अंबाबाई गोंधळाला ये, तुळजा भवानी गोंधळाला ये, अगं काळूबाई गोंधळाला ये. I would request Amok Sase to felicitate the Nirmal Sakhi group.
Jai Shri Mataji. The next is a dance performance, Bal Shakti Sabha with Shri Mataji in the Heaven, scripted by Hyderabad Collectivity and composed by Pune Collectivity. Collectively, the Bal Shakti are performing this drama together at the lotus feet of Shri Mataji. The presentation is by Pune Bal Shakti. अगला जो परफॉर्मेंस है बाल शक्ति सभा श्री माता जी के साथ हेवन में, हैदराबाद कलेक्टिविटी ने स्क्रिप्ट किया है एंड कंपोज किया है पुणे कलेक्टिविटी ने. जय श्री माता. A day in heaven with Shri Mataji. It's a beautiful bright day in the heaven. All the angels, ganas and yogis are preparing for Shri Mataji's arrival in the Sabha room soon. People in the heaven are discussing, few of them are plucking flowers and making garlands, and few are cleaning the altar, and the others are preparing the instruments for Shri Mataji's welcome. Shri Mataji, please grant your permission to offer a dance in your holy lotus feet. Yes, you can. तारित झम तझम तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिण तारित झम तझम तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिण तारित झम तझम तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिण तारित झम तझम तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिण तारित झम तझम तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिण तारित झम तझम तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिण तारित झम तझम तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिण तारित झम तझम तरिता तदिमित किट तक तदिगिण तारित झम तझम तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिण तारित झम तझम तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिण तारित झम तझम तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिण तझम तकझम तकिट झम तक तकिट झम तकिट तगदिगु तदिगिण तझम
ಕಿಟಜಂ ತಕ ತಕಿಟಜಂ ತಕಿಟ ತಗದಿಗು ದದಿಗಿಡದು ತರಿ ತದಣ ದಣ ದಣ ತ ಜೋಡು ಜೋಣು ಜೋಣು ತದಿ ಮಿರಿ ದಿಮಿ ತಗಿಡ ತಗ ತರಿ ತದಣ ದಣ ದಣ ತ ಜೋಡು ಜೋಣು ಜೋಣು ತದಿ ಮಿರಿ ದಿಮಿ ತಗಿಡ ತಗ ತರಿ ತದಣ ದಣ ತ ಜೋಡು ದಗುಂದರಿ ಗಿಡ ದಗ ತರಿ ತದಣ ದಣ ತ ಜೋಡು ದಗುಂದರಿ ಗಿಡ ದಗ ತರಿ ತಾಂ ತದಣ ತಾಂ ತ ಜೋಡು ತಾಂ ತಗದಿಗು ಕಡದ ದರಗಡೋಂ ತಗದಿಗು ಕಡದ ದರಗಡೋಂ ತಗದಿಗು ಕಡದ ದರಗಡೋಂ ತಾರಿ ತಜಂ ತಜಂ ತರಿತ ತದಿ ಮಿ ತಗಿಟ ದಗ ತ ಕದ ತದಿ ಗಿಡದು ತದಿ ಮಿ ತಗಿಟ ದಗ ತ ಕದ ತದಿ ಗಿಡದು ತದಿ ಮಿ ತಗಿಟ ದಗ ತಗ ತದಿ ಗಿಡದು ತಾರಿ ತಜಂ ತಜಂ ತರಿತ The sabha starts. Children are sitting around Shrimataji. Don't take bandhan. Shrimataji is here now. Our mother Kundalini is already up. So we are already protected. Shrimataji then smiles. Mother, what are we going to do today? Tell me, what do you all want to do? Mother, can we hear a story? Stories, yes, stories. All right. If you all want to hear the story, then let's do it. Mother, can I ask you a question, please? Yes, you can. As you are our mother and Guru, do you also have a Guru? Yes, of course I do have. Let me tell you the story. And my mother and Guru is this Mother Earth, which teaches me how to deal with human beings. And she's the one who also, in every stage of difficulties, helps me to correct my own methods of Nirmala Vidya. She has been such a kind mother and a kind Guru to me. And she is such a soothing personality. All this green, though is given to her by sun, as they say, is just to soothe us all. She wears the green upon herself, and the green is the Guru principle. She is the detached personality. She is the magnetism. She attracts. When people are walking on her, she is looking after them. So, did you all enjoy the story? Yes, Mother. Very good. So now, some of you can get up and perform dance in praise of Mother Earth. Adi Bhumi, Adi Bhumi, Adi Bhumi Devi, Adi Bhumi, Adi Bhumi, Adi Bhumi Devi. Namaste, Namaste, Adi Bhumi Devi. Namaste, Namaste, Adi Bhumi.
That was a beautiful dance. So, let me ask you a question. Do you all know what is the place of Guru in our subtle body? Yes, Mother, in our Bhavsagar. Correct. Shrimataji, can you tell us a story about a king now? Okay. So, would you like to hear the story of Raja Janak, who is also known as the Guru of all the Gurus? Yes, Mother. Raja Janaka was the father-in-law of Sri Ram. This Raja Janaka was a king, and all the saints used to bow to him. So one fellow asked his guru, why is it you bow to this king? He is a king, and what is so great? He said, he's the only one who can give realization, and he's so high. So he sent one of his disciples, his name was Nachiketa, to Raja Janaka. Raja Janaka told him, no, you can ask anything, but I'll not give you self-realization. He said, no, sir, I must have it. I want to know about myself. So he said, all right. So first he took him with himself to have a bath in the river. I mean, many tests he took, but lastly. And there he was having his bath. While people came and told that, sir, he was meditating. He was in thoughtless awareness, just enjoying himself. And they came and told that your palace is on fire. Still he was meditating. Then they came and told him that now all the family is running away from the palace. Still he was meditating. Then they said the fire is coming here and will burn everything that you have. Now this fellow ran out and he clutched his clothes because he thought this will be all burned. But he was still meditating. And then when he opened his eyes, he saw nothing has happened. I know nothing has happened. And it's nothing important to me. So the detachment is within. It's not without. You don't have to announce it. It is within. Mother, can we enact what we learned from your story now? Yes, you can. Nachiketa and his guru are having conversation with each other. Oh Master, please show me the path for the self-realization. At that particular time, the guru sees Raja Janak passing by and touches Raja Janak's feet. Why did you touch the feet of a king? You are a guru and he is a king having a lavish lifestyle. You were just talking about your self-realization. Then I suggest you should go to Mithila. As you say, Master, but I am still curious. You just go and you will come to know everything. Okay. Nachiketa comes to Mithila and enters the courtroom. As per my master's command, I have come to you for my self-realization. Please guide me. Welcome to Mithila. I want to see how prepared you are for your enlightenment. Nachiketa thinking in mind. He will test me? Being a king? Let's see what he wants to know about me. You please take rest today and let's go tomorrow for a bath at Sarayu River. Okay. Next morning at the river Saryu, Raja Janak and Nachiketa are bathing together. One of the courtmen from Raja Janak's court arrived to tell him that the palace has caught fire and the fire is rapidly progressing and moving towards the river. Rajan, your palace is burning down. Let's go and check. It's okay. I am in meditation now. The another courtman arrives to inform the king that the palace is completely burned and now it's very near to the river. How? Tell me how you are so calm in a situation like this. Whatever is to be destroyed gets destroyed. The truth always remains. This is all illusion. It's part of Maya. Now I realize
why my Guru sent me to you, and you are known as the Guru of the Gurus. Please accept me as your disciple and enlighten me with my self-realization. Mother, can we perform Guru Vandana in the praise of our Gurus who reside in our Bhavsagar? Yes, please. Why are they so sad? Why is he crying? And they all look so serious. I am sad when I am hungry and get cranky too. But I have listened
from Sri Mataji's speech that Sri Krishna is always joyous and happy in every circumstance. Oh, so let's see. Sri Krishna is having Leela with his friends after stealing butter from one of the house in Vrindavan. Shri Krishna is enjoying stolen butter with his friends. Krishna, again you broke my butter pot? Come, I will take you to Mata Yashoda. Oh dear mother, what is my fault? Just that I ate Vrindavan's most delicious, sweet, mouth-melting butter. You make such delicious butter. Mother, you really want to punish me for this? Oh, my dear Krishna, your sweet voice and compassion has melted my heart. I forgive you. Krishna and his friends are troubling the gopis of Vrindavan. Oh Krishna, why do you keep bothering us? Oh Radha, you know, when I break your pots and the water flows from your pot onto your back, it raises your kundalini. Shri Mataji, how was our act? Did we depict Shri Krishna's qualities correctly? I am glad that you all listen to my speeches and understand very well. So, Shri Krishna was a collective person, very compassionate, and his madhurya used to melt everyone's heart. You should all imbibe his qualities and become one like him. We promise, Mother. We all will try to become like Shri Krishna. Shri Mataji, we really enjoyed today's Sabha. Thank you so much, Mother. We are drenched with joy and vibrations. Mother, can we offer dance to show our joy? Yes, you all can dance now in complete Niranand.
I would, I would request Pednekar ji to felicitate the team. पेडनगर जी से विनती है टीम को फेलिसिटेट करें. Before we move to the next performance, at the end of this session today, we'll be having a seminar and panel discussion, question and answers. So there is a box that is kept over here with papers and chits. You may fill up whatever questions you have regarding Sahaj Yoga, and you can put it in the box. And all these questions will be addressed in this seminar. इस सेशन के एंड में एक क्वेश्चन एंड आंसर पैनल डिस्कशन सेशन है, जिसके लिए जो भी आपके मन में सवाल हैं, प्रश्न हैं सहयोग के रिलेटेड, वो आप लिख के एक बॉक्स में डाल सकते हैं. इधर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो भर के इस बॉक्स में डाल दें. Venu means bansuri. Nad means the sound. Venu Nad is the sound of a flute. Venu का मतलब बांसुरी और नाद का मतलब है धुन. वेनु नाद का मतलब है बांसुरी की धुन. जो अगला ग्रुप है वो भजन्स और बांसुरी के साथ हमें ये सेशन देगा. इसमें सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मिस्टर प्रवीण साठे को, जो अपने फ्लूट के साथ परफॉर्म करेंगे. उनके साथ है मिस्टर सिद्धनाथ जयवीर, मिस्टर राहुल लोंडे एंड मिस्टर ओमकार पवार, जो सिंथेसाइजर और तबला पर हैं. और उनके साथ है मिस्टर राजेश नंदुरकर, जो भजन गाएंगे. ये म्यूजिकल टीम पिछले 3 साल से कई सारे पब्लिक प्रोग्राम्स में महाराष्ट्र में परफॉर्म करती आई है. The next performance are bhajans with flute. I would like to introduce Shri Praveen Sathe, who will perform with his flute. With him are Mr. Siddhanath Jayveer, Mr. Rahul Londe, and Mr. Omkar Pawar on the synthesizer and tabla. And with him is Mr. Rajesh Nandurkar, who will be singing the bhajans. This musical team has been performing at public programs in the last 3 years in Maharashtra. Jai Shri Mataji.
We are now ready to begin the performance. Viraj Sable will give a brief introduction from the team. Viraj. जय श्री माताजी.
जय श्री माता जी। अखिल जगत से आए हुए सभी सहयोगी, आज सहयोग प्रचार प्रसार राष्ट्र इनके माध्यम से आदरणीय साबळे सर जी और आदरणीय परिंची साहब इनकी माध्यम से आज यहाँ सेवा करने का मौका मिल रहा है। कुछ महीनों पहले इस परिवार में आए और माता जी ने यहाँ के खड़ा कर दिया। ये हमारा परम भाग्य है कि आपके सामने यह सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत ही आज शुक्रगुजार हूँ कि आज आप इतने सालों से सहयोग में आए होंगे, लेकिन अभी मेरी शुरुआत है और अभी स्टेज पे आने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से आगे जाके मैं सहयोग में मेरे पूरी ताकत के साथ डिवोट के साथ डिवोशन कर पाऊँगा सहयोग के लिए। धन्यवाद। Jai Shri Mataji. All respective Saijogi brothers and sisters and all devotees of Shri Mataji who have came here to attend this wonderful ceremony and puja. I would like to thanks all Nirmala Nagrik supporters who allowed us to perform flute musical program, the Holy Flute of Shri Mataji. जय श्री माता जी। श्री माता जी से अनुमति लेके इन युवा कलाकारों को अनुरोध करते हैं इनके कला की प्रस्तुति करें। प्रचार प्रसार में इनका संगीत सेवा में हमेशा योगदान रहा है। श्री माता जी से प्रार्थना है इन लोगों का ऐसा ही योगदान रहे और आगे बढ़ते जाए।
यानंतर वैष्णव जन तो तेणे कहिये या हे इन्स्ट्रुमेंटल सादर होईल.
यानंतर ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले. इन्स्ट्रुमेंटल सहयोग्यांच्या विनंतीवरून त्यांना आपण सांगितलेलं आहे की हे भजन बसवा. उत्तम सादरीकरण त्यांच्याकडनं होईल.
इसके बाद माउथ ऑर्गन पे राहुल सर जिनके ये शिष्य है वो माउथ ऑर्गन पे राम आएंगे ये परफॉर्म करेंगे। समय के अभाव के वजह से हमको यहाँ तक ही परफॉर्म करना है। माता जी।
युवा कलाकारों के लिए होनी चाहिए। श्री माता जी से प्रार्थना है इन्हें ऐसे ही सहयोग से जुड़े रखे और इनके द्वारा संगीत की सेवा प्रचार प्रसार में प्राप्त हो। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। I would like to request Sridhar Pai ji to felicitate श्री प्रवीण साठे जी एंड हिज टीम। श्रीधर पाई जी से अनुमति है कि आके प्रवीण साठे जी और उनकी टीम को फेलिसिटेट करें।